की दरवाजे महाराज की दरवाजे महाराज की सनातन शांति नावासे जयदास ठाकुर की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर शिवाजी गौर भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन की रंगराज भागवतम की वृंदावन धाम की मथुरा धाम की श्यामपुर भगवान की श्री क्षेत्र जगन्नाथ धाम की नवदीप भारत धाम की बलराम जमुनावान की भक्तराम की मंगल आरती की दामोदर भगवान की अनंत गौर all results की जनरेशन माता भगवान की नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय
वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय केशवस्ताय विष्णुपते सत्यते नमः वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय वृंदाय तुलसीदाय प्रियाय केशवस्ताय विष्णुपते सत्यते नमः आनंदाभूतिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मा स्थापनम परमविरते श्री कृष्ण संकीर्तनम नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् नमामि दुर्दैवमिदृशं यज्ञान्यनुरागा कृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमामि नमानतेन कीर्तनीया सदा हरि न जनं न सुन्दरीं कवितां जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवता भक्ति हेतुके त्वयि अयिनन्दा तनुजा किंकरं पतितं मामिषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज सितदूरी सदृशं निचिन्तय नयनं करदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्राय वीरा पुलकैर्निशितं बभूवदा तव नामाग्रहणे भविष्यति युगायितं निमीशेन चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरयेण मे आशिष्य वा पादरतं पिनस्तु मां दर्शनं अर्हतं करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लङ्कटो मत्प्राणनाथोऽस्माय विनापरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री शिष्य शास्त्रों की जय चैतन्य महाप्रभु की जय। Following are the 10 offenses to be avoided when chanting the holy name of the Lord. The first offense is to blaspheme the devotees who had dedicated their lives to reading the holy name of the Lord. Second, to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma, to be equal to or independent of the name of the Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of the spiritual master. Fourth offense, to blaspheme the Vedic scripture or scriptures in questions to the Vedic worship. Fifth, to consideration direct to imagination. Sixth, to give some interpretation to the holy name. Seventh, to commit sinful activities on the strength of the holy name. Eighth offense, to consider the chanting of Hare Krishna as one of the auspicious ritualistic activities which are offered in the Vedas as fruitive activities, karma kanda. 9. To instruct the faithless person about the glories of the holy name. 10. To not have complete faith in the chanting of the holy name and maintain to mental attachment even after understanding so many instructions on this matter. It is also offenses to be negated to while chanting. Every devotee who claims to be Vaishnava must regard these offenses in order to quickly achieve the desired success, Krishna Prema. Let us offer humble obeisances to all the Vaishnava devotees of the Lord who are just like desires, who can fulfill all desires, are full of compassion for the fallen conditioned souls. Brahmacharya Sri Saraswati ki